Hello student, how are you? Our today's topic is human reproduction. Before start this topic, we have discussed some points of previous lecture. It is reproduction in flowering plants, where you have read a lot of terms like apomixis, like polyembryony, like embryo development, post-fertilization event, endosperms formation, gametogenesis, and gametogenesis, then after that agent of pollinations. So this same type of process is going on in human reproductions, means there are transfer of gametes, gamete formation, transfer of gametes, so all process going in human reproduction. So today's topic is human reproduction. In this topic, according NCERT syllabus, you will read the male reproductive system. First क्या है? The male reproductive system. Second, female reproductive system. Then gametogenesis. Then menstrual cycle, fertilization, implantations, pregnancy and embryo development, and at last you will read lactation, parturitions and lactation. So these are the common topics or main topic of human reproductions. So today's we will read human reproduction. Today's topic is introduction, male reproductive system, reproductive systems, figures, accessories, duct system, accessory glands and the external genital. These are the today's topic. Human reproduction. As you are aware, humans are sexually reproduced and viviparous. Now, one term has come here, viviparous. What is the meaning of term viviparous? When organisms after reproduction gives their young ones. ठीक है, जब young ones को वो देता है, birth करता है, this is called as viviparous. The reproductive event in human include gametes, gametogenesis. You have already read in sexual reproduction in plants. Gametogenesis, formation of gametes. Then sperms in male क्या है? ह्यूमन बीइंग में कौन से गैमेट्स हैं? स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. स्पर्म्स मेल में एंड ओवम इन फीमेल. क्लियर? उसमें हम लोगों ने पॉलन गैमेट्स रीड किया था. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेट. हेयर again same word is given there. The sperm formation is male gamete, sperm is male gamete, ovum is female gamete, and formation of sperm, formation of ovum is called gametogenesis. So gametogenesis, sperm in male and ovum in female, and transfer of sperm into the female genital tract, insemination. Plants में process क्या थी? Pollination. Animals में क्या है? Transfer of sperms into the female genital tract, it is called as insemination. And third process, fusion of male and female gametes or fertilization, which you can say syngamy, leading to the formation of zygote. It is obviously after the fertilization zygote is formed. This is followed by formation and development of blastocyst. Now ये जो zygote है उसमें क्या फॉर्म कर रहा था? जाइगोट मोनोकोटिलिडन सीड्स और डाइकोटिलिडन सीड्स में और फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है पूरी ओवरी. यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस. जाइगोट मल्टीप्लाई होके और मल्टीसेलुलर एक बॉल मास बनाता है. दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू द यूटेराइन बॉल. कहाँ ये अटैच? सो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो रहा है. जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट इज अ सेल मास ऑफ सेल. समझ में आया? ब्लास्टोसिस्ट क्या है? मास ऑफ सेल एंड इट अटैच टू द यूटेराइन बॉल. अब ये यूटेराइन बॉल पर अटैच्ड होगा. क्यों अटैच्ड होगा? क्योंकि विविपेरस है, तो फिटस को डेवलप होने के लिए एक प्लेस चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इम्प्लांटेशंस होना ज़रूरी है. मीन्स
अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन बॉल, ये ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच हो रहा है? अटैच ऑफ यूटेराइन बॉल, इट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशंस। आर यू क्लियर स्टूडेंट? जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन बॉल से अटैच हो जाएगा, दिस इज अ इवेंट एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. Now embryo development. After that implantations, embryo will be developed and this is called as gestations. Gestatation, gestations, and delivery of the baby, parturitions. ये terms आपको learn करने हैं. Partition, gestation, implantations, gametogenesis, insemination, fertilization. These are some words which you have to just keep in your mind, because this term always come in different form of questions. You have learned that these reproductive event occur after puberty. Clear student? ये puberty period you just read in lesson 1 कि puberty period क्या होता है? जब reproductive organisms fertilization और reproductively एक्टिव हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी पीरियड. ठीक है, 14 to 16 ईयर, 12 to 14 ईयर इन गर्ल एंड 16 to 18 to 20 ईयर बॉय और मेल. दिस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी पीरियड. आफ्टर प्यूबर्टी पीरियड ये प्रोसेस बॉडी के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट गिव्स अ रिमार्केबल differences between girls and boys. These are remarkable difference between the reproductive event in male and the female. For example, sperm formation continue even in old man. Sperm formation काफ़ी लंबे टाइम तक बॉयज़ में और ओल्ड मैन में स्टार्ट होता है. बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर. वुमेंस में 50 ईयर के बाद ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है. ठीक है, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो दीज आर द इंट्रोडक्शन एंड देयर आर सम टर्म्स विच वी हैव डिस्कस. यू विल रीड इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वी विल टेक फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in pelvis region. It's include a pair of testes along with accessories, duct, glands and the external genital. Male reproductive system consists of the following: primary sex organ testes, secondary or accessory sex organ accessories duct, retitestes. You just read this term because there is students always confuse accessories duct and accessories glands. So this term you just keep in your mind. Accessories duct are retitestes, vasa efferentia, epididymis and the vasa deferens. Are you clear? Again I will repeat it. Accessories duct are retitestes, vasa efferentia, epididymis and vasa difference. You have read class 10th also. ठीक है. Accessory glands, seminal vesicle, prostate glands and bulbourethral glands और Cowper glands. Glands का क्या काम होता है? Glands कुछ secrete करती हैं. Digestive glands हुआ, accessory glands in male reproductive, ये secretions देती हैं. And duct का काम क्या है? एक connectivity form करना. ठीक है. डक्ट मीन्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर की जो कनेक्टिविटी होती है इट इज कॉल्ड एज डक्ट. तो एसेसरीज डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड्स आर both are two different name and their meaning is also different. Accessory glands में क्या रहा? seminal vesicle, prostate glands and third one is Cowper glands or bulbourethral glands and last part is external genital. ठीक है. These are the male reproductive system and we divide male reproductive system in following term: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें आपने इंक्लूड किया एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटल. क्लियर स्टूडेंट? नाउ
testes. Now this figure, it is given in your NCERT book. It is very in this figure you can see all organs from which male reproductive system are formed. First we will start this figure. This one is seminal vesicle. Seminal vesicle we will discuss later on what is the function of it. Rectum, bulbourethral glands, this one is anus, epididymis, anus, and there urethra and their ejacticular duct, urinary bladder, pubic bone, vasa differentia यहाँ से start हो रहा है. This one is testes, this one is testes, and next testes, then glands, rectum, seminal vesicle, epididymis, scrotum. Scrotum is pouch-like structure where testes present. Then vasa differentia, this one is vasa differentia. It is start from testes से ये एक long duct like structure form हो रही. This is called as vasa differentia. ठीक है. Urethra, ठीक है. Foreskin, testes. So these are the some organs of the male reproductive system. Here we will discuss the all organs, their functions, their glands, and all each and every glands and ducts we will read in detail. So this is the structure of the male reproductive system. Now we will discuss the which view, the diagrammatic view of the male reproductive system, part of testes to open show inner details. ठीक है. तो इसमें और भी organs clear हैं. This one is ureter. You just know this is a very important thing in basically in case of male reproductive system. This is called as urogenital system. Male reproductive system को क्या कह रहे हैं? Urogenital system means urinal system and genital system का track same होता है. Are you clear, student? So this term is urogenital system. Okay. Now each lobule contain 1 to 3 coiled tubules called as seminiferous tubules in which sperms is produced. Seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on the inside of the two highly specialized cells called the male germ cells or spermatogonia or Sertoli cells. ये figure spermatogonia undergoes meiotic cell division to produce sperms. Here these points given how spermatogenesis going on. ये वाली जो process हम लोग read कर रहे हैं spermatogenesis की कर रहे हैं. And this figure we have discussed in just previous slide. Are you clear? Vasa differentia यहाँ से आप clear कर लोगे कौन कौन से organ हैं. First one is lobule testes. This is called as testes. Testes से attached. This one is epididymis. Testes से attached है. Epididymis. It is just and in one coiled like or tube like structure which is called as vasa differentia. Vasa differentia open in seminal vesicle and here prostate glands are there. These prostate glands give some secretions to seminal vesicle and after that bulbourethral glands is also provide some secretions. After that these sperms or semen it will become in form of urethra and after that it will be used for or it will be go or transfer in female genital tract. So this is the process. Now student there are next is male reproductive system, then accessory duct glands, accessory duct system में you will read seminal vesicle. So these are the structure of the seminal vesicle tubules. ये seminal vesicle है. Seminiferous tubules open into vasa efferentia through retitestes. Several vasa efferentia open into the epididymis. Epididymis क्या है? A lot of vasa efferentia. बहुत सारी vasa efferentia open हो रही है epididymis में and carry sperm outside the testes.
स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर जा रही हैं. एपिडिडाइमस, दिस वन इज इन प्रीवियस स्लाइड यू सी एपिडिडाइमस, इट इज लॉन्ग कॉइल्ड एंड इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है ना एपिडिडाइमस. यहाँ से टेस्टिस जुड़ी है, ठीक है, टेस्टिस से अटैच्ड स्ट्रक्चर है और ये आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. एपिडिडाइमस इज लॉन्ग कॉइल्ड टू प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस. टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. इट कंटिन्यूज एज अ वासा डिफरेंस एंड ये आगे जाके वासा डिफरेंस के फॉर्म पे कंटिन्यू हो रहा है एंड एसेंड्स इनटू द एब्डोमेन टू द लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर में लूप के फॉर्म पर एंटर हो रहा है. एपिडिडाइमस टेम्पररी स्टोर नॉन मोटाइल और इमैच्योर स्पर्म. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये क्या है, स्पर्म्स को तो स्टोर करता है बट दिस टाइम इट इज टेम्पररी स्टोर, कुछ समय के लिए स्टोर करता है. एंड स्पर्म्स नॉन मोटाइल होते हैं उस समय. कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल. तो नॉन मोटाइल स्पर्म्स ऑलवेज इमैच्योर. कैसे होते हैं नॉन मोटाइल, यदि वो इस समय पे इनिशिएटिव स्टेज पर, डेवलपिंग स्टेज पर है. इट इज कॉल्ड एज मैच्योर. क्लियर. तो एपिडिडाइमस का क्या काम है, एपिडिडाइमस इट्स स्टोर नॉन मोटाइल एंड इमैच्योर स्पर्म्स. दिस सी दिस फिगर, इट इज लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, एक लोब्स के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रहा है. ये वाली जो है एक मेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है पूरी. आर यू क्लियर. मेल गैमेटोजेनेसिस मीन्स हाउ टू स्पर्म फॉर्म. तो फर्स्ट जो स्पर्मेटोगोनिया, मेन जो सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो फिर डेवलप करके धीरे धीरे स्पर्मेटोजोम है और स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी. सर्टोली सेल्स वो सेल्स हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी. और दो लोब्स के बीच की जो स्पेस है इट इज़ कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये दो लोब के बीच की जगह पर इंटरस्टिशियल सेल्स है, ठीक है. ये कुछ हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करेगी, लेट अस भी डिस्कस, ठीक है. द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड वासा डिफरेंस टुगेदर फॉर्म आ इजेक्टिकुलर डक्ट. इजेक्टिकुलर डक्ट कैसे फॉर्म हो रही है, दो से. किस किस से, सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस. सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस दोनों फॉर्म करके क्या बना रहे हैं, इजेक्टिकुलर डक्ट. ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इजेक्टिकुलर डक्ट. सी दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा. ये दिस वन इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है. क्लियर स्टूडेंट. नाउ so we will read again this line. The duct from seminal vesicle and vasa difference together form a ejecticular duct. Ejecticular duct किससे फॉर्म हो रही है, सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस से. They passes through the prostate glands. Ejecticular duct prostate gland से पास होकर and join the urethra. यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है, जो यूरिन का भी पैसेज होता है और किसका भी, स्पर्म सीमेन का भी पैसेज है. दिस इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. दे कैरी सिक्रेशंस ऑफ द, क्या दे रहे हैं, सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स. सिक्रेशंस दे रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स का. एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है. सो दीज आर द कॉमन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज accessory glands and accessory glands A and external genital. Accessory glands or external. So student, accessory glands or external genital, this is the next part of the male reproductive system that we will discuss in next chapter. Here we will give you some points. Now it is related to male reproductive system, so listen very carefully. First one is testes, accessory ducts, glands or external genital. Now one term is come as scrotum. कौन सा टर्म आ रहा है,
it is scrotum. First term is come as scrotum. SCROTUM. ये टर्म क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. स्क्रोटम में क्यों होते हैं स्पम्स टेस्टिस? बिकॉज scrotum help in maintain the low temperature of testes 2 to 2.5 degree lower than the normal internal body temperature. हमेशा टेस्टिस बॉडी के बाहर और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड है. क्यों? बिकॉज उसको स्पम्स डेवलप करने के लिए उसको टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 तक उसका लोअर होना चाहिए. अंडरस्टूड? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका उससे कम होना चाहिए, इसलिए ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर होते हैं. दैट्स अ रीजन टेस्टिस आर situated or located a pouch like structure. It is scrotum where it gets a suitable temperature to develop sperms. Are you clear? Now next term is testis. Mostly कैसे होती है? In adult each testis is oval in shape with a length about 4 to 5 cm and breadth कितना है इसका? 2 to 3 cm. ठीक है, सेंटीमीटर. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. आर यू क्लियर स्टूडेंट? ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. लोब्यूल्स अभी जस्ट वी हैव डिस्कस इन डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कि उसमें कितने लोब कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं. देन ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 or 3 हाईली coiled seminiferous tubules. ठीक है. नाउ each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 type of cell called male germ cells or Sertoli cells. Now, you have already read these terms in diagram section view of seminiferous tubules. यहाँ पे Sertoli cells है और दूसरा कौन सा है Sertoli cells के अलावा? सेकेंड वन इज Sertoli cells और male germ cells. ठीक है. मेल जर्म सेल्स अंडरगोज म्योटिक डिवीजन और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. एंड सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल्स. यहाँ पे स्टूडेंट यू जस्ट टू लर्न दिस पॉइंट यू जस्ट कंपेयर दिस टू पॉलन ग्रेन्स डेवलपमेंट. पॉलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल्स मिल रही है और जर्म सेल्स मिल रही है. ठीक है ना. जर्म सेल्स 2 मेल गैमेट्स प्रोवाइड कर रही है और जो उसकी वेजिटेटिव सेल्स है वो क्या लार्ज होती है, उसमें बहुत साइटोप्लाज्म होता है, वो हेल्प कर रही है न्यूट्रिशन के लिए. सेम कंडीशन यहाँ भी है. मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स. मेल जर्म सेल्स क्या डेवलप करेगी? स्पर्म्स. और सर्टोली सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. द मेल जर्म सेल्स अंडरगोज meiotic division finally leading to sperm formation while Sertoli cell provide nutrition to the germ cells. ठीक है. तो यहाँ पे क्लियर हो गया. नाउ एक और पॉइंट आता है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. ठीक है. लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज और सिक्रेशंस टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स. एक हार्मोन्स आपने एंड्रोजन्स हार्मोन्स रीड किया क्लास 10th में. इट इज प्रोवाइड बाय लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल. इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स कॉमन नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है. लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स. तो एंड्रोजन्स कहाँ से निकल रहा है? इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स. अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो उसकी इम्यूनिटी पावर्स को भी इंक्रीज करती हैं. ठीक है. तो सो दीज आर द सम टर्म्स विच कम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ we will discuss accessory glands or external genital in next class or next lecture. Thank you, student.